सीक्रेट रखना है यार, ये किसी को ना बताना। इसको चेंज करना पड़ेगा ये पासवर्ड, तो मेरी और भी काफी जगहों पे यही पासवर्ड आपका है। ऑफिशियल ठीक है? ऑफिशियल काफी जगहों पे है, बहरहाल ऑफिशियल भी है, काफी जगहों पे इसका ये अलग है। से सेपरेट नहीं बन सकता जूम का? जूम हम्म। का तो बिल्कुल अलग होना हाँ, चाहिए। इसका अपना पासवर्ड सेटिंग होगी ना इसके अंदर जाके, कि मैंने तो जब बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, तो मैंने वही रख दिया। अब ये है कि पासवर्ड इसका शेयर करने के लिए इसकी जाना पड़ेगा, इसमें सेटअप में कहीं होगा इसका सेटअप। ये लगाओ यार। हेलो। हेलो। पानी ले आओ और जूस भी ले आना। कितना टाइम देते हैं अभी? 9 बजे। है इसमें, है इसमें ऑप्शन होती है। इसमें होते हैं ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन। नहीं, इससे तो स्क्रीन उल्टी हो जाती है, बंदा उल्टा हो जाता है। ये देखो, लेकिन ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, या वीडियो गेम खेलने वालों में तो वैसे ही पता होता है। गेम्स होती है ना कहीं में। नहीं, ये भी नहीं होता। कईयों में आप कोई चीज गलती से खा लें तो कंट्रोल उल्टे हो जाते हैं, और वो 2 मिनट उल्टे ही रहते हैं, वो बड़ा गंदा हो जाता है काम पे। आप वो गेम खेल रहे हैं ना, एक कोई खाने वाली चीज मिल गई आपको, वो खा ली है आपने, गलती से वो खा ली है। अब आप इधर करेंगे तो वो जाएगा इधर, गाड़ी जो है ना उल्टी जाएगी। तो प्रैक्टिस हो जाती है, हर चीज की प्रैक्टिस हो जाती है बंदे की, ठीक है। लेकिन ये भी, ये कौन है यार? क्या रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑन हो गई? और रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए।
हो गई यूनिवर्स दोबारा ये दबाओ रिकॉर्डिंग फिगर आ गई रिकॉर्डिंग ऑलराइट मारिया अब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें जी सर, कर दिया। वो कहीं से मैंने मेरे हाथ डिलीट तो नहीं कर दी दोबारा कर दें जी। जी सर, कर दिया। ऑलराइट राइट सो we were talking about these timers. So let's start what we have already talked about them that the timers can be stopped and started by software instructions. Basically, they are counters with a clock. The only difference between a counter and a clock is that the clock timing is known. That is very important. The time for one clock cycle, a time period of the clock is known and it is used in the calculation. Mm, so they can be stopped and start, they can be reset, they can be preloaded with any value. And when they overflow, they set a timer flag. So that happens when they roll over from 11111 to 0000. The clock can be internally divided by a prescaler. The prescaler can be 1, 2, 4, 8, 16, 32, up to 256. If the timer a timer can generate an interrupt. That's the interrupts are our next topic. So the counter goes like this. This is the clock of the counter, and as you can see here, the counter with yeah, here we have reset the counter, so all outputs are 000. So with first clock cycle, राइट जमशेद स्टेट कैचर तो हम इंटरनली कंप्यूटर के अंदर घुस के किसी पर्टिकुलर टाइम काउंट को पकड़ने के लिए स्टेट कैचर उसके अंदर तो नहीं ना लगा सकते जाके टाइम काउंटर किसी पोर्ट पे नहीं आ रहा होता कि हम इसके आउटपुट पे स्टेट कैचर लगा दें तो टाइमर टाइमर का कोई स्टेट कैचर नहीं उसको सॉफ्टवेयर में आप चेक कर सकते हैं कि उस टाइम तक उसने काउंट कर लिया कि नहीं बट देन दैट किल्स द पर्पस कि अगर आपने उसको बार बार चेक ही करना था तो फिर टाइमर का फायदा क्या हुआ टाइमर इज समबडी हु कैन बी आस्क्ड टू काउंट फॉर सर्टेन टाइम एंड व्हेन इट द टाइम इज फुल इट शुड स्टॉप काउंट so that's the purpose of the timer so talking about this clock over here so with reset it goes the d0 is changing all the time 01010101 even number odd number have 0 1 bit changing so you can see here the q0 is changing q1 is changing on the rising edge of this clock or falling edge of this clock so it goes like that if this is changing on the falling edge of this clock it goes like that so that makes what is called a binary counter if it is a divide by 4 counter, it will overflow when the all of the output become 000 and we'll have an overflow OV flag or IF flag instruction interrupt flag that is set to 1. Timer uses a very important a real-time clock where the time is a event counter, stopwatch, time delay generation, watchdog timer,
serial port, waveform generation, PWM generation, and so on. Uh, I'll talk about these. All process industries heavily depend on timers for real-time control. This can be for driving a stepper motor in a printer, or filling a cement bag or a bottle by opening a valve for a certain time. And so many examples we talked about in the last lecture. So the applications of these timers are to generate delays. So you can set a timer to, since the clock is known, we can ask the timer to count for a particular, up to a particular value. When that value is reached, we say no, that our desired delay has been achieved. So when it is used as a counter, that's very interesting. When it is used as a counter, then uh, the clock doesn't come from its internal crystal. The clock comes from something connected to the port, and basically what its use is very important use. It's like you want to count the traffic on a road. So you can connect the external clock to the traffic sensor. Every time a car passes in front of the sensor, it generates a pulse. That pulse goes to the counter, and counter counts one. So rather than using software to detect a pulse, we can ask the counter to count. And after, maybe we can use another timer to generate a delay of 2 hours. And in 2 hours, we can read the first timer to see how many, what is the count. That will tell us that in 2 hours, how many cars have crossed in front of the sensor. So processor doesn't have to do anything. After 2 hours, it can reset the counter, and the counting of the car can start all over again. So processor can then see what is the uh, frequency of the car, what is the density of the traffic in that particular road. So counter is then used by an external clock. It is not, and that clock is doesn't have any time, because car can be passing at any time. Maybe only 4 cars in 2 hours, maybe 100 cars in 2 hours, maybe 200 cars in 2 hours. So it will count based on uh, the car frequency. So, but you can read the counter output after 2 hours to see how many cars have passed. So it's like, ask somebody to stand on the side of the road and count the car, and I'll come back after 2 hours and I'll ask you what is your count. So ये counter is just like a man. You assign it to count cars. वो जिस तरह वो मुझे याद है ना कि कभी जा रहे होते तो बेटी को किसी काम पे लगाना पड़ता था गाड़ी में, ताकि वो जरा, तो सड़क के किनारे वो, कौन सी सड़क थी, फैसलाबाद मोटरवे, उसके ऊपर उस जमाने में काफी उन्होंने ना उस खजूर के दरख्त लगाए हुए थे, जो बड़े प्यारे लगते थे। अब तुम बेशक, मेरा ख्याल है काफी उनमें से वो अ, मर गए हैं, चले नहीं, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी चलते थे। तो मैंने उसको कहा कि ये खजूर के दरख्त गिनना शुरू कर दे। तो ख़ैर वो गिनती रहती थी, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल शी वुड गेट टायर्ड, और वो से, मुझे आपने किस काम पे लगा दिया है, मैं कोई दरख्त गिनने के लिए गाड़ी में बैठी हुई थी आपके साथ, ये है, वो है। तो बहरहाल वो एज़ अ काउंटर आई कुड यूज़ हर टू काउंट का ट्रीज़ ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो इस तरह से ये काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं टू मेजर नॉन पीरियोडिक इवेंट्स। इसको कहते हैं इवेंट काउंटर। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, व्हेन यूज्ड एज एन इवेंट काउंटर, कि कितनी दफा एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, उसको कहते हैं इवेंट काउंटर। तो दैट द सेकंड इज इंटरवल काउंटर, कि आप है 1 मिली सेकंड की क्लॉक है,
आप दो सेंसर लगा देते हैं और एक्सटर्नल पिन इसके ऊपर है अ, कोई एक पर्टिकुलर पिन आप असाइन कर सकते हैं कि जिसके ऊपर एक पल्स दें तो वो काउंटर काउंट करना शुरू कर दे, और जब दूसरी पल्स दें तो काउंटर स्टॉप हो जाए। तो 1 मिली सेकंड की अगर है तो आप इससे कोई रेस की टाइमिंग करनी है या किसी लैब की टाइमिंग करनी है, तो वो इस तरह से वो काउंटर यूज होता है। तो व्हेन यू पास वन सेंसर, counter starts counting. When you pass another sensor, it stops. So that way it can give you interval in milliseconds, because the clock is internal 1 millisecond, highly accurate clock. So then it will be used as an interval counter, जिसको stopwatch भी कहते हैं. Timer is also used for serial communication, because serial communication requires precise waveform timing, so that cannot be achieved through software easily. So we need to have a timer. So timer can be used to generate precise PWM that we can use. We'll talk about that. Uh, a down counter timer. PWM we'll talk about later. Down count timer. जो stopwatch में और timer में फर्क है मोबाइल फोन में. Timer is when you are making it to count down. तो आप उसको सेट, यू कैन सेट इट फॉर 2 minutes, and when it reaches 000 counting down, then you it can sound an alarm. So that's the timer use. This timer requires the last application requires a lot of uh, explanation to do, and that is the watchdog timer. Every microcontroller has a watchdog timer. What is watchdog timer? वॉचडॉग टाइमर ये है कि इस पहले तो समझे कि वॉचडॉग टाइमर जो है ना सिस्टम क्लॉक पे चलता है, इसकी क्लॉक की भी प्री स्केलर वगैरह आप सेट कर सकते हैं. सो द प्रॉब्लम विद दिस वॉचडॉग टाइमर इज दैट व्हेन इट ओवरफ्लोज, it resets the processor. No matter what the processor is doing, it's like pushing the reset button on the processor. So what is the use of this watchdog timer? Anyone? How can we use watchdog timer? कि जब ये ओवरफ्लो करता है ना, ये प्रोसेसर को रीसेट कर देता है. Anyone? सर वो जैसे जो कंप्यूटर्स खुद ही स्लीप हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा देर उससे यूज़ ना करें. नहीं, वो रीसेट तो नहीं ना होते. रीसेट नहीं होता है. ट्रू. तो क्या यूज होगा इसका फिर वॉचडॉग टाइमर का? बेसिकली watchdog timer is a runaway dog. It's all the time running, and you know when it is going to hit the end, processor is going to reset. So what you do is in your software, if in your software like while loop बनाई हुई है 2 सेकंड की या 1 सेकंड की या कुछ, in your software you keep on resetting the watchdog timer. And if for some software glitch or some unknown reason processor is stuck somewhere, hang हो जाता है processor gets hanged somewhere, and most probably in that hang routine, in some hang routine, it won't be able to reset the timer. अगर तो and as a result timer will go towards the end and will reset the processor. So it's basically to save from processor getting hanged.
अब आप देखें ना, किसी सैटेलाइट में प्रोसेसर अगर कोई हैंग हो जाता है, तो आप किसी बच्चे को तो नहीं कह सकते बेटा जाओ छोटे, जाओ यार जाकर ना जरा वो सैटेलाइट में जाओ, जाके उसका रीसेट बटन दबाओ, प्रोसेसर हैंग हो गया है, और हाँ, और वापसी पे आते हुए मेरे लिए कप चाय भी ले आना। दैट विल नॉट वर्क। तो टाइम वाचडॉग टाइमर जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज in real time applications, where you it can seize millions of dollars. इफ फॉर रीजन कोई लाइटिंग स्ट्राइक हुई है या कोई ज्यादा कोई चार्ज कहीं से आ गया है, एंड प्रोसेसर जो है ना वो मेल फंक्शन करता है, किसी ऐसी रूटीन में फंस जाता है फ्रॉम वेयर इट कैनॉट गेट आउट एंड इज नॉट पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, तो आपने हमारे जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है ये ऐसा नहीं करते। आप कोई ऐसी पुरानी सी सीडी डाल दें जिसके अंदर स्क्रैचेज हो, तो वो उसको रीड करने में लग जाएगा और ऑलमोस्ट हैंग हो जाए। तो लेकिन जो आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, देयर यू नीड अ वॉच डॉग टाइम इन योर माइक्रो pick microcontroller where you use watchdog timer, but it has been disabled। वरना तो आपकी ट्रैफिक लाइट रूटीन एक रेड लाइट चले और येलो चले, और अगर आपने सॉफ्टवेयर में उसको रीसेट नहीं किया हुआ तो वो येलो तक शायद हो सकता है वाटर टाइमर ओवरफ्लो हो जाए, वो फिर रेड येलो सारा दिन यही करता रहे। तो वॉचडॉग टाइमर को हमने उसमें डिसेबल किया हुआ है। यू कैन एनेबल इन रियल टाइम एप्लीकेशन, यू कैन एनेबल योर वॉचडॉग टाइमर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It's part of safety of the processor and reliability. So after all, processors are processor, they can get mad at some time. So you can't really trust them all the time. Uh, so another application is real-time clock, where a special crystal is used. Uh, that crystal has a frequency which is exactly 2 raised power x. So that when we do 2 raised power x time उसको 2 से divide करेंगे तो we'll get exact 1 second clock. A very popular time crystal, real time crystal is 32768, 32.768 kilohertz. So when that is divided by 15 times, you get exact 1 second clock. You also get 1024 second clock, a millisecond clock, which is roughly equal to 1 second. So these are important, uh, uh, and real-time clocks are there in every processor, and you can attach a real-time clock with your computer also, with your microcontroller. We'll talk about that. So there is a small little module with this Panasonic button cell, and the clock is very low power system. So this button cell can last up to 10 years. So it works like a quartz watch. Yes, you are right, Junaid. So it works like a quartz watch. So this button cell है कि बड़ा हुआ button cell. So this button cell actually watch का मॉड्यूल भी है। ये देखा। So you need a watch module also. So uh, so this you can see here, the small little button cell. It is used in many handy embedded systems like glucose monitoring के लिए जो होता है वो आपका
ग्लूकोमीटर है, तो गाड़ियों के रिमोट में यू विल फाइंड दिस सेल, although there is no real time clock in the car remote, but you know glucometer में आप date time, all right. So then this is a has a life for a real time clock, it can last up to 10 years. तो पुराने ज़माने में मदरबोर्ड पे 10 साल बाद आपको ये सेल भी चेंज करना पड़ता था, क्योंकि क्लॉक वुड कीप रीसेटिंग एंड द प्रोसेसर विल गो आउट ऑफ ऑपरेशन. So please do remember these applications. So 32768. If you look at the data sheet for an IC DS, किधर गया माउस, माउस नहीं कब वो आ रहा है, DS 1378, you will find that it's pretty useful for real-time clock applications. So this is what we talked about in the last lecture, that we have a clock source, which is crystal clock frequency divided by 4, or it can be event based. In that case, external event can act as the clock. तो इवेंट टाइमर के जब आप करते हैं या इवेंट काउंटर जब यूज करते हैं, देन दिस क्लॉक सोर्स इज अ पिन, एक्सटर्नल पिन, विच इज जिस पे हाई करेंगे तो क्लॉक आएगी. देन ए प्री स्केलर दैट is usually used for this crystal oscillator, then a counter and a post scaler. We will not talk about post scaler. Post scalers are implemented in software. मीन्स काउंटर है, 1 सेकंड का काउंटर है, 1 सेकंड से ज्यादा काउंट नहीं कर सकता. आप को बहुत बड़ी फर्ज करें क्रिस्टल लगानी पड़ती है, बहुत हाई स्पीड क्रिस्टल लगानी पड़ती है. इन दैट केस आप सेकंड काउंटर कंप्यूटर में बना देते हैं कि जब भी 1 सेकंड कंप्लीट हो तो कोई वेरिएबल सेकंड काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं. वो पोस्ट स्केलिंग हो जाएगी. दैट इज इन सॉफ्टवेयर. Scalar we talked about. This is the diagram that we talked about in the last lecture also. So it can be mux. This is the mux we talked about, and this is a start clock and bit counter overflow. The crystal clock source can be one of these events. Event counter can be selected, and RC. In that case, you have to connect a resistance and a capacitor only, nothing else. But then the timing is not very accurate. It's absolutely not accurate. There is an internal oscillator also, which is also not very accurate, although it is temperature compensated, but that is not also very accurate. With that internal, you don't have to connect any external circuit. No crystal, no capacitors, nothing. So the disadvantage is that the timing again is not accurate. But advantage is that if you are producing a system where the frequency is not very important, then the cost of the product becomes very low. Crystal cost almost the same as maybe a small little microcontroller. होगी इतनी है ना. सस्ता सा माइक्रो कंट्रोलर 100 रुपए का होगा. 80 रुपीज का सस्ता माइक्रो कंट्रोलर, और क्रिस्टल 10 रुपीज का क्रिस्टल. Anyway, when you're talking about bulk, everything counts. Everything counts. So this is a multiplexer that selects, and it is not software selectable. This is selectable through fuses. Fuses are those settings that you do in the processor using programmer. एंड प्रोग्रामर को बताना पड़ता है कि मेरी कौन सी इसमें सॉफ्टवेयर में आप नहीं कह सकते कि आप क्रिस्टल यूज करना शुरू करो, आप ये कर सकते हैं. एनीथिंग दैट यू डू in the programmer, there is a special way of setting few things in the programmer in the firmware of the processor. Those are called fuses. So when you make a project, you will notice that there are lots of fuses there.
इस पे है लगी हुई? नहीं, माइक्रो सी है इसमें। लेट मी शो यू। नहीं नहीं नहीं। So if you go into the project and if you go into the edit project, स्लाइड वाली स्क्रीन है। And so here you see, if you go into the project and you press edit project. So you see all these fuses. Here you can see HS high speed oscillator. If the processor is to run beyond 4 megahertz, then you set SS. So these are different clock sources that you can select. External RC oscillator, external clock, and so on. Ye crystal oscillator is this XT oscillator. But we select HS because we select more than 4 megahertz crystal. So there is a watchdog timer here. Also, you can see watchdog timer that is reset to 0. Brownout reset. What is brownout reset? When the processor frequency, processor for some reason processor power supply start to wane, slow down or come down. So when it reaches a certain level, like from 5 volt to 4 volt, it will reset the processor. You can set the brownout reset voltage also, at what voltage you want to reset the processor. So these are the things that you cannot do uh, in the software mostly. These are the things that are called fuses. Fuse कहते हैं इसको, for some reason I don't know why they are called fuse. फ्यूज कोई और चीज होती है जो बर्न हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ऑन हो जाती है, लेकिन दीज आर द फ्यूजेस बिकॉज दे आर बेसिकली स्विचेस इन द प्रोसेसर। और कुछ स्विच ऑन करें तो कहते हैं जी फ्यूज ऑन हो गया, स्विच ऑफ करें तो फ्यूज ऑफ हो गया, तो इसलिए इसको फ्यूज भी कह देते हैं फॉर सम रीजन। सो दीज आर द फ्यूजेस। We have not talked about most of these, but they are not one, there are many of them. And all of them, to learn them, as I said, this whole complete processor understanding requires a lot of timing, a lot of time. So we are only going for the tip of the iceberg. The real processor is under the water, and unfortunately that only needs a lot of practical side. You come across a problem, then you try to find, like you come across a problem, your processor is resetting for some reason or hanging for some reason, and then someone may be able to tell you there is something called watchdog timer that can help you in that. So these things are only, many times they are only useful when you come across a trouble and you want to find out some solution for that. So there is a power up timer also that is usually needed because the system sometimes cannot, you don't want to start your program before the whole big factory का सारा कुछ setup नहीं हो जाता.
तो आपने तो एक मेन स्विच फैक्ट्री का ऑन किया, आपकी हर चीज एम्बेडेड चीजें सारी स्टार्ट हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि जब तक पूरी हर चीज स्टेबल नहीं हो जाती आप उसको ना करें, तो उस केस में आप पावर अप टाइमर इनेबल कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि 4 सेकंड के बाद जब कोई प्रोसेसर को पावर अप करे, उसके 4 सेकंड के बाद मेरी सॉफ्टवेयर चलनी शुरू हो। So these are very important features of the processor, and they have been done with a lot of thoughtfulness. As I said, this is poetry in motion. This is double E poetry. शायरी है ये डबल ई। ये हर बंदे ने अपने अपने इसमें शेर डाले हुए हैं। ये पूरा दीवान है आपके सामने। शायरी की कलेक्शन है ये, जस्ट नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी मैनी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। So we were talking about this. The timers we talked about, timer has two registers associated with that we talked about, timer 0H, timer 0L. Because the processor is 8-bit, so 16-bit timer is uh, can only be approached at 8-bit at a time. आप 16 बिट का इकट्ठा डाटा उसमें नहीं डाल सकते। So you have to load port B, sorry, timer, you have to load value. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइमर को कहते हैं कि 8 बिट का टाइमर यूज करें और हर सेकंड के बाद इंक्रीमेंट हो, और पोर्ट बी पे टाइमर 0L को आप कॉपी करेंगे, तो आपको पोर्ट बी के ऊपर हर सेकंड के बाद काउंट इंक्रीमेंट होता नजर आए। In your software, if you copy port B equal to timer 0L and timer is running at 1 second clock, you will see that the port B will be incrementing after 1 second, and process won't be doing anything. It will not use any delay. You will have to just say in your main while one loop port B is equal to timer 0L. Like this. अनशेयर कर देना, स्क्रीन ऊपर लिखा होगा अनशेयर, अनशेयर कर देना। नीचे रेड कलर का अनशेयर, रेड कलर। So basically, if you set your timer to 1 second, we'll talk about that, how to set. Then you can say there you have to do in the main, you have to do setup timer. Then only you need to do it once. So in while one, you can say port B equal to timer 0L. This sign means that I'm basically trying to distinguish between O and a zero. So अक्सर ये करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट के, ओ को इस तरह लिखते हैं, जीरो को इस तरह लिखते हैं, ओ को इसके बगैर लिखते हैं। तो टाइमर 0L। अब इसमें कुछ और नहीं है। अब कोई और आम आदमी कंप्यूटर साइंटिस्ट देखेगा, वो कहेगा यार ये तो एक ही वैल्यू पोर्ट बी पे डिस्प्ले हो रही है, तो ये आपने क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है। That is where we kind of separate from traditional programming paradigm. Here you can see here that the timer is in the background and its output is changing. And if you want to do reset the timer, say after 1 minute, you can see here that if TMR 0L equal 60,
TMR 0L equal to 0. So it will only then count up to 59 and it will never reach 60. So you can see here के यहाँ पे आम आदमी अगर इस प्रोग्राम को देखेगा और पूछेगा भाई इसमें ये टाइमर को इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ये क्या सीन है, कौन है जो टाइमर के साथ कुछ छेड़ रहा है, ये तो हैंग हो जाएगा प्रोसेसर, या ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, एक ही चीज बार बार प्रोट पे आती जाएगी, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस. So before I go further, I think I have to quit the slides because slides waste a lot of time. And you can read some slides on your own. What I want to do is how to set a timer to do particular time without processor's intervention, sorry, invention कह दिया, without processor's intervention. Let me take a little drink. Eh? So what you don't do is that you start the timer from 000 and you keep on monitoring timer के timer 0L और 0H ये किसके बराबर है, इसको मॉनिटर करें, ये नहीं आप करते. डोंट डू दिस. आप ये नहीं करते. हम क्या करने लगे हैं? हमने ये देखना है कि टाइमर्स को हाउ टू सेट टाइमर सेटअप फॉर पर्टिकुलर डिले. The delays that you use using 1 millisecond delay underscore ms, they are approximate delays because they are uh, basically software delays. They don't use the timer. क्योंकि अगर वो टाइमर यूज करेंगे तो आपके पास टाइमर यूज करने के लिए नहीं बचेगा. So the software used when you say delay underscore ms underscore 100, then it uses software counting. Count में चलता है वो. When it does that, it processor is busy. It's not it has to wait. You cannot do simultaneously some other thing. So you can use timer setup for particular delay, accurate delay. So you to set that, first of all, you need to calculate the time, delay time. तो मैं कहता हूं जी मुझे चाहिए कोई एग्जांपल बताएं, कोई टाइम चाहिए डिले टाइम, किस टाइम के लिए मैंने प्रोसेसर को सेट करना है, कोई एग्जांपल टाइम बताएं. आप में से कोई बताएगा? हैदर इरफान, हैदर, आर यू देयर? ईमान, आर यू देयर? कोई भी नहीं Yes, है. sir. हाँ, कोई टाइम बताएं जिसकी डिले क्रिएट करनी है आपने. Sir, 5 milliseconds. 5 मिलीसेकंड. अच्छा, 5 मिलीसेकंड. Assume that we have a delay required. क्लॉक कितनी है क्रिस्टल, ये कितने हर्ट्ज की है ये भी पता होना चाहिए. फिर हमें फर्ज करें क्रिस्टल है
8 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिस क्लॉक होगी, सिस्टम क्लॉक होगी, जिसमें प्रोसेसर चलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 2 megahertz. From that, the t becomes equal to time period. T is equal to f over 1 over f is equal to 1 over 2 megahertz. Mag is 2 10 raised power 6, which is 1 over 10 raised power 6 is micro. So this is equal to 0.5 microsecond. अब 5 मिलीसेकंड की डिले करने के लिए हमें कितने टाइम पीरियड चाहिए इसके अंदर? काउंट नीडेड Sir, 10,000. 9 10,000 काउंट नीडेड, हाँ 10,000 काउंट नीडेड। ये यार इसको, हाँ इस पे किया हुआ ना, ठीक है। काउंट नीडेड इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड बाय द टाइम पीरियड दिस, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना बनता है ये? 5 मिलीसेकंड 10,000. डिवाइड बाय 0.5 है 10,000। Yes, sir. आप फर्ज करें अगर आपके पास, मैं कहता हूँ भाई 8 बिट का टाइमर है मेरे पास, यूज कर सकते हो, बड़ा टाइमर नहीं यूज कर सकते। तो 8 बिट का टाइमर तो जो है वो 255 क्लॉक साइकिल के बाद ओवरफ्लो कर जाएगा। तो व्हाट यू डू इज, वो यूज अ प्री स्केलर ऑफ से 4, 4 का प्री स्केलर यूज करें तो आपका टी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, विच इज 2 माइक्रोसेकंड। तो अगर प्री स्केलर मैं यूज करता हूं तो द टाइम, अब टाइमर की क्लॉक का मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या रखें, इसलिए मैंने उसका नाम आज पहली दफा उसको एक नया नाम देना चाह रहा हूँ। उसका नाम मैंने रख दिया जे क्लॉक। जे पता नहीं क्यों मेरे ध्यान में आया, वैसे ही बस मेरा ध्यान में आ गया जे क्लॉक। जे क्लॉक इज द फाइनल कैलकुलेटेड क्लॉक। तो जे क्लॉक जो है वो किसके बराबर होगी? वो आपकी जो है सिस्टम क्लॉक डिवाइडेड बाय प्री स्केलर। सिस क्लॉक डिवाइड बाय प्री स्केलर। तो अगर आपकी सिस क्लॉक है 2 मेगाहर्ट्ज और आपने प्री स्केलर 4 का है, then this comes out to be equal to, j clock will be equal to 2 megahertz divided by 4, ये कितना बन जाता है? 500 किलोहर्ट्ज। 20 2 मेगाहर्ट्ज का मतलब 2000 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 4, 2000 डिवाइड बाय 4, 500 किलोहर्ट्ज। तो इस तरह से जो आपका टाइम आएगा टी जे, ये टी जे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी जे इज द एक्चुअल फाइनल क्लॉक टाइमिंग दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 over 500 kilohertz, which is equal to, किसके बराबर होगा? करना यार कैलकुलेटर पे। Sir, 2 micro. 2 माइक्रो 2 माइक्रो सेकेंड।
So 500 millisecond will have how many 2 microseconds? Count needed. J count. Count needed is the J count needed by for the microcontroller is J count is equal to, ये भी J भी मैंने एक terminology निकाल ली है. No one is stopping me from doing that. It's my, you know, prerogative as a teacher. So J count is equal to 5 millisecond की delay required divided by TJ, time of the final clock that goes to the processor timer. So this comes out to be equal to 5 millisecond divided by 2 microsecond. सर थोड़ा सा नीचे करिएगा कैमरा प्लीज, नजर कैमरा नहीं आ नीचे रहा। करो ना यार, जूम कर दो, यहाँ पे नीचे करके जूम कर दो, और नीचे, हाँ यहाँ पे जूम कर दो. तो दिस इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोसेकंड. ये किसके बराबर आएगा, कौन बताएगा? ईमान. 2500 सर। 2500? आर यू किडिंग? ये तो अभी भी बहुत ज्यादा है. हमें लेस देन 255 लेके आना है क्योंकि हमारे पास 8 बिट का टाइमर है. ओहो, ये तो बहुत ज्यादा है अभी भी. 2500 तो कितना करें? 2500 का मतलब ये कि इसको तकरीबन 10 से और डिवाइड करें. 10 इज नियरली इक्वल टू डिवाइड बाय 16. 16 तो 4 से तो हम पहले ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 4, 64 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो लेट्स यूज प्री स्केलर ऑफ 64. So 2 megahertz divided by 64 is equal to how much? करना यार, 2 megahertz divided by 64. हाँ भाई ईमान. सर 31.25 किलोहर्ट्ज। 31.25 kilohertz. 31.25 kilohertz. थोड़ा मुझे था नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, मैं तो आराम से मिटा के लिख सकता हूँ. तो 1/31.25 kilohertz is how much? सर 32 माइक्रो। 32 microsecond. तो TJ is equal to this 32 microsecond. So, एक टाइम पीरियड जो फाइनल, ये देखे ना, ये आपके क्रिस्टल है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 मेगाहर्ट्ज. आगे हमने लगा दिया डिवाइड बाय 4. वो सिस्टम करता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्ज. आगे हमने इसके आगे लगा दिया प्री स्केलर, वो डिवाइड करे 64 से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 31.25 kilohertz. This is the frequency that goes to our timer. सर Yes. सर अगर जो डिवाइड बाय 64 है वो प्री स्केलर है, तो जो ऊपर डिवाइड बाय 4 है वो क्या है एग्जैक्टली? वो ये एक प्रोसेसर की अपनी रिक्वायरमेंट है. हमें जो भी क्रिस्टल लगे ना, उसको डिवाइड बाय 4 करके वो सिस्टम क्लॉक बनाता है. यही यूज होती है. इससे हाई फ्रीक्वेंसी नहीं आप ले सकते कहीं भी. तो ये इससे हमारा ताल्लुक नहीं कि ये क्यों करता है. ठीक. Basically, this is beginning starting point is this 2 megahertz, ओके सर. and that is derived from 8 megahertz divided by 4. तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से ये निकलती है. इस 2 मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है.
So basically a 2 megahertz, 2 million instructions per second, 2 megahertz. So you have here this frequency which has a 32 microsecond time. So 5 millisecond divided by 32 microsecond, अब क्या आंसर आता है भाई ईमान? 156.25. 156.25, which is nearly equal to 156. तो क्योंकि काउंटर तो इंटीजर काउंटर है ना, उसने से 0 से 255 तक जाना है, तो ये 0.25 का हम कुछ नहीं कर सकते, नियरली इक्वल टू 156. तो इतना काउंट हम स्टार्ट करेंगे इस काउंटर को, और जब ये 156 पे पहुंचेगा तो एग्जैक्टली यू विल बी हैविंग डिले टाइम ऑफ 5 मिलीसेकंड. तो दिस इज हाउ द टाइमर कैन बी यूज्ड टू सेट. अब ये आप करने से करेंगे, होना तो ये चाहिए कि आप टाइमर को रीसेट करें, उसको स्टार्ट कर दें. अब उसकी आउटपुट चेक करते रहें कि कब उसकी आउटपुट 156 हुई है. When the output is 156, exactly timer 0L को पढ़ते रहें. When the output is equal to 156, you would know कि टाइम exactly 5 मिलीसेकंड का होगा. देखिए 5 मिलीसेकंड जो है वो हमारे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है. 5 मिलीसेकंड, द मिनिमम टाइम ह्यूमंस कैन रिस्पॉन्ड टू इज 1 मिलीसेकंड. कोई भी रियल टाइम सिस्टम जो है, ये नोट करें मेरी बात, कोई भी रियल टाइम सिस्टम जो है वो 1 मिलीसेकंड से ज्यादा का उसको नहीं चाहिए होती. आप स्पोर्ट्स को देखें, आप बड़ी सी बड़ी रेसिंग, हाई स्पीड रेसिंग को भी देख लें, आपको टाइमिंग जो है ना 0.0003 डेसिमल प्लेसेस तक मिलेंगे. इवन कार रेसिंग को आप देख लें, हाई स्पीड मोटर बाइक रेसिंग को देख लें, अल्टीमेट टाइम आप 100 मीटर रनिंग को देख लें, आप स्विमिंग को देख लें, किसी भी चीज को देख लें. इवन मिसाइल भी जा रहा है, उसको गाइड करना है आपने, उसको थोड़ा सा उसको ऑफ ट्रैक हुआ है, वापस आपने उसको ट्रैक पे लेके आना है, तो आप उसको 1 मिलीसेकंड के बाद आप उसका ट्रैक चेंज कर सकते हैं. उससे हर वक्त करने की जरूरत नहीं है. So millisecond for us is very small time. For processor it's a very long time. लेकिन अब कितनी मुश्किल से हम पहुंचे हैं इसको इससे डिवाइड करके कहीं जाके हम 5 मिलीसेकंड का हमें टाइम मिला. सो टाइमर हमें चाहिए 156 तक. अगर हमने टाइमर सीरियल कोई 156 तक मॉनिटर करना है तो वो तो फिर जो है ना वो जरा गलत बात हो जाएगी. वो तो फिर वहीं पे आ गए हम. टाइम तो एक्यूरेट मिलेगा 156 के बाद. ये 32 माइक्रोसेकंड से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमें एग्जैक्टली 5 मिलीसेकंड का ही मिलेगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह करते नहीं है. करते कैसे हैं? करते ये हैं कि टाइमर को आप प्री लोड करते हैं 255, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस 156, विच इज नियरली इक्वल टू 100. तो 100 जब यहां से होता है, ऑलरेडी इसका काउंट 100 है, तो ये काउंट करेगा जब, तो ओवरफ्लो कितनी देर बाद करेगा? 100 से इसने काउंटिंग स्टार्ट की है, ओवरफ्लो कितनी देर बाद करेगा? 156 मोर क्लॉक साइकिल, 99 कर देते हैं इसको. तो 99 इसमें लोड कर देते हैं. और बेसिकली आप इसको क्या करते हैं, आप इसको क्या इधर करना या कैमरा नीचे थोड़ा और. हाँ. तो आप इसको यहां से छोड़ देते कि यहां से भागना शुरू करो. जब भी वो टाइमर गिरेगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई टाइम पूरा होगा.
बजाय इसके कि टाइमर ने तो भागते रहना किसी डॉग की तरह। आप उसको डॉग को कहते हो भागो, जब वो यहाँ से नीचे गिरेगा तो आपको पता लगेगा टाइम पूरा हो गया। तो जब ये ओवरफ्लो करेगा तो यू विल नो कि टाइम पूरा हो गया 5 मिली सेकंड का। ये वाला टाइम एग्जैक्टली 5 मिली सेकंड टाइम हो। So you load the timer rather than making the time start from 000 and you see the count कि कब किस जगह पे काउंट पहुंचा है। 16 बिट टाइमर के लिए काउंट को कंपेयर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू भी बराबर हो, ये वैल्यू भी बराबर हो, तो वो तो बड़ी सॉफ्टवेयर डिले भी काफी चाहिए। तो इसमें ये है कि ये बड़ी आसानी है, आपसे वो फ्लैग को मॉनिटर करें। व्हेन ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट, यू नो कि 5 मिली सेकंड हो गए। फिर उसको ओवरफ्लो फ्लैग को आपको जीरो खुद करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। तो यू मेक इट जीरो अगेन, यू कैन लोड अ न्यू वैल्यू। आप 5 मिली सेकंड के बजाय आप 2 मिली सेकंड की वैल्यू चाहिए, आप इसको 2 मिली सेकंड के हिसाब से इसको लोड कर देते हैं। तो इस तरह से यू कैन जनरेट एनी पर्टिकुलर डिले ऑफ योर लाइकिंग, जो भी आपको चाहिए। तो टाइमर्स आर वेरी पावरफुल। So maybe next time or some other time we'll see कि ये ओवरफ्लो हो तो प्रोसेसर को ओवरफ्लो फ्लैग को भी मॉनिटर ना करना पड़े। जब ओवरफ्लो फ्लैग होता है तो प्रोसेसर कैन ऑटोमेटिकली रन ए टास्क। So you are basically then to go into multitasking. So you have a main, you have a timer task, timer one task, timer two task, timer three task, timer four task. So they are multitasking. तो इन दैट वे यू मे बी डूइंग एनीथिंग। आप टाइमर को कहते हैं 5 मिली सेकंड की डिले दो, यू मे बी डूइंग एनीथिंग। देन टाइमर ऑफ फ्लोर, आप 5 मिली सेकंड वाली रूटीन में जा सकते हैं। यू कैन सी कि ओके आई एम हियर, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई वांटेड टू डू आफ्टर 5 मिली सेकंड वाज सम व्हाटएवर दैट वाज, यू कैन डू इन द दैट टास्क। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम बड़ा शानदार तरीके से, बहुत ज्यादा, तो प्रोसेसर को आप ऑफलोड करते हैं तरह तरह हर तरह की प्रॉब्लम से। प्रोसेसर इज द किंग ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। उसके उसको उसको ज्यादा काम नहीं उससे करवाते कि बैठ के चेक करो ओवरफ्लो फ्लैग तो नहीं हो गया, बैठ के चेक करो काउंट इतना तो नहीं हो गया, बैठ के चेक करो ये तो नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, ये नहीं हो गया। The best software is which has minimum work to be done in the while one, and most of the done work is done in timer tasks that then become the highly time oriented real time application. So timers are very important. Your processor has a timer. Windows has a 10 millisecond, 1 millisecond timer. After 1 millisecond, the processor timer, Windows does a scheduling uh, window. It sees के कौन सा प्रोसेसर जिसको schedule करना है। Linux uses a 10 millisecond timer. टाइमर हर एक प्रोसेसर में है, हर दुनिया के प्रोसेसर में टाइमर होता है। आपको मैंने वो दिखाया भी था उस दिन, रिसोर्सेज आप जाके देखें प्रोसेसर के, वो सिस इन्फो में जाके, तो वहां पे आपको टाइमर टाइमर नजर आएंगे कि कौन सी पोर्ट पे लगे हुए हैं टाइमर, या आपके डेस्कटॉप प्रोसेसर के टाइमर नजर आएंगे कि वो किस पोर्ट पे लगे हुए हैं। अगर उस टाइमर को आप खराब कर दें तो विंडोज बैठ जाएगी, क्योंकि विंडोज ने वो टाइमर से टाइम लेके उसने स्केजुलिंग करनी होती है। अदरवाइज देर इज नो वे टू फाइंड आउट कि मैंने कब स्केजुलिंग पॉइंट मेरा कब आएगा। So these timers really are the backbone of real-time operating system. They are backbone of any processor. They are backbone of any embedded software. So they are backbone of industry applications.
इंडस्ट्री में तो बेशुमार टाइमर्स होते हैं। पहले ज़माने में क्रिस्टल से पहले टाइमर का कंसेप्ट नहीं था, तो टाइमर मैकेनिकल टाइमर सेट करने पड़ते थे, 1 घंटे के लिए जो टिक 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 करते रहते थे। और ये टाइमर और भी बड़ा जगह पे यूज होते हैं, फिल्मों में टाइमर यूज होते हैं। डाउन टाइमर होता है जब वो 5 मिनट पे सेट कर देता है और 5 मिनट में वो फिर आधे घंटे की मूवी सारी चलती है कि वो 5 मिनट से पहले पहले हीरो ने जाके टाइमर को रीसेट करना होता है। मोस्टली हीरो रीचेज द टाइमर रीसेट करने के लिए बस तकरीबन आधा ही सेकंड रह जाता है, इससे ज्यादा नहीं अफोर्ड करते लोग। तो यार आधे सेकंड रह गए, मतलब 2 5 4 3 2 1 0 के ऊपर कबूम होना होता है, लेकिन बस 1 भी हो जाता है तकरीबन, और हीरो जो है ना वो कोई तार काट देता है, तो नहीं होता। और ये मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने इतना बड़ा डिस्प्ले क्यों लगाया होता है साथ में, बताने के लिए कि कितना टाइम रह गया। ये आज तक मिस्ट्री है कि फिल्मों में मतलब मैं कोई और डिजाइन करेगा वो डिले ये टाइम दिखाएगा तो नहीं कि कितना टाइम रह गया। क्यों भाई जमशेद, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस आर यू देयर जमशेद? यस सर, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, समझ आ गई आज का लेक्चर? कोई क्वेश्चन पूछें? हाँ भाई, हुदा सजाद, आर यू देयर? यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, आ गया समझ। समझ आ गई है? और राइट देन सर हमारे एक रिक्वेस्ट थी हाँ जी सर, क्विज जो है वो वीकेंड के बजाय हमारे क्लास टाइमिंग्स में हो सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि वीकेंड पे मतलब जाना होता है कहीं और इस तरह। वैसे भी आपने जो स्केड्यूल अपलोड किया था उसमें क्विजेज थर्सडेज को होते थे, अच्छा तो ये थोड़ा मसला हो रहा है हमें। तो ये कह रही थी कि अक्सर लोग जो ना वीकेंड पे क्विज लेते हैं। मारिया आपकी कोई राय? जी सर। हाँ मारिया, आपका क्या ख्याल है? ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में ले लें क्विज, दैट इज ऑन ट्यूसडे। सर फिर थर्सडे को भी क्विज होगा, क्योंकि थर्सडे को भी उसके हिसाब से कोर्स आउटलाइन के हिसाब से क्विज है। चलें ठीक है, 2 कर लेंगे क्विज, हमने काफी पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीक विल हैव 2 क्विजेज। सर एक क्लास में होंगे 2 क्विज के सेपरेट क्लासेस में? सेपरेट क्लासेस में। नेक्स्ट ट्यूसडे वीक थर्सडे। वी विल हैव सही है ट्यूसडे को सर। एक क्विज होगा, दैट विल बी अप टू आवर डेक एंड पोर्ट डिजाइन, और उससे अगला क्विज जो होगा वो होगा टाइमर के ऊपर। ठीक है सर। तो विल हैव 2 क्विजेस, नो क्लास नेक्स्ट वीक, सिर्फ क्विजेज होंगे। तो 2 क्विजेज विल हैव नेक्स्ट वीक। सो विल डिजाइन ऑनलाइन क्विजेज होंगे, आपने वो करके ना तो उनकी वो पीडीएफ बना के भेजनी होगी। ओके ठीक है, ठीक है फिर सर। जी संडे का सर, क्विज कैंसिल बेस्ट है करते सर। हैं। एंड ठीक लेट्स है, सी थैंक्स। गुड पॉइंट, हुएवर कौन सा ये जो जी सर। हम चाहेंगे कि आपकी आसानी हो यार, ऑनलाइन में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमें बताया करें, उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह आपको विल ट्राई टू अकोमोडेट यू। तो लेट्स हैव नेक्स्ट वीक में हम फिर क्विजेस करते हैं। या ठीक है, यही थैंक यू होगा सर। कि क्विजेज में आपकी वो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम थ्योरी वाइज थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो आइडिया यही था कि हम थ्योरी और क्विजेज करके जल्दी से फारग हो जाएं और लेक्चर खत्म कर दें बहुत जल्दी। तो प्रॉब्ली नो लेक्चर इन द लास्ट मंथ और सो, तो सारे लेक्चर पहले ही खत्म कर दें, लेकिन फिर इस तरह से वो हो नहीं सकेगा। मैं चाह रहा था कि लेक्चरिंग जो है ना वो खत्म ही हो जाए। एनीवे, so as you wish, your wish is our command. Thank you very much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू सर।